Namaste and Jai Guruji Sangatji. I'd like to share a satsang, and I think it'll be really relevant to all the sevadars and people holding satsangs at their house. So this is a very recent satsang, but uske pehle I'll just give a bit of a background कि जो भी हम करते हैं, जे हमारा भाव, हमारा प्यार हो, Guruji will accept it. So going back around COVID, just before COVID, मेरे दिल में बहुत देर से था कि मैं सत्संग करूं, but for some reason or the other, I just couldn't do it for various reasons. पर मैं बैठ के I was planning with Guruji, जे मैं सत्संग करती तो मैंने ऐसे करना था कि आपका दरबार एक कलर में सजाना था, and I would have a heart shape of rose petals, and आपकी गद्दी ऊपर रखनी थी, and then मैं मेन्यू में सोच रही दाल and पनीर भुर्जी and खीर और जो प्लेट्स में मैं सर्व करूँगी it'll be deep dishes के खुला मिले, और जो खुला भी ना हो, because shallow plates होते हैं छोटे छोटे खाने, and the dal is going into the other and it just gets messy. So I was thinking मैं ऐसे plates में दूंगी और चाय भी खुली दूंगी in slightly बड़े cups कि चाय आराम से पिएं, and so this was what was going on in my mind, and then I got invited to a satsang. तो मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ पे फिर after the shabads and all that, लंगर प्रसाद जब सर्व हो रहे हैं and मैं खा रही हूँ, and गुरुजी मुझे कहते हैं ऊपर देख वो वॉल पे, तो मैं ऊपर वॉल पे देखती हूँ तो वहाँ पे इतना बड़े पिक्चर है of a big heart in multi-colors of yellows and pinks and reds. And then it suddenly dawns on me that these are like the petals I had visualized around Guruji's sort of gaddi, and then I'm looking at the langar prasad that I'm eating, and it's exactly how I'd visualized it, of the paneer bhurji and the dal and whatever else she had served, and it was in those deep wide plates, dishes, and jo chai prasad bhi aaya came in a bigger cup and quite full up, and I just was so dumbstruck ke wow Guruji, मैंने सोचा, और this was exactly how I wanted to serve it, and वो संगत को इतना प्यार से दे रही थी, and she had given halwa packed in boxes for people to take back, and I then understood कि हम अपने भाव से कुछ दें गुरुजी को तो he will just accept it with love. So coming back to my satsang very recently, so this sangat, they live in a bit far away from me, तो they are young sangats और इतने प्यार भाव से वो करते, तो उनका मुझे मैसेज आता है कि सत्संग में आप प्लीज कड़ा प्रसाद लेकर आ सकते हैं, and I was overjoyed. I thought this is one of the, such a divine seva of making kara for Guruji, जो Guruji अपने हाथों से बांधते थे, and I remember Gauri Aunty Satsang के she wanted to make the kara prasad for Guruji, और इतने साल पूछते रहे और she couldn't make it, and it's such a beautiful divine thing, such a beautiful seva to do. तो मैं अपने मन में कर रही हूँ कि गुरुजी मैं सुबह उठूंगी और जैसे सुबह का टाइम एंड शब्द लगे होंगे, एंड मैंने खुद अपना घी बनाया, एंड मेरा जो आटा था इट वाज मल्टीग्रेन, सो आई थॉट नहीं ये कड़ा प्रसाद खाली कनक आटे का होना चाहिए, सो आई गेट द कनक का आटा, और मैं अपने मन में विचार कर रही हूँ कि बिकॉज जो भी मुझे सेवा मिलती थी फॉर टेकिंग जो भी लंगर प्रसाद की चीज़ें, मैं नॉर्मली कार में जाती थी और वहाँ पे शब्द बजा के ले जाती थी, एंड मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी आप ही बना रहे हो, बिकॉज आई नेवर टेस्ट जो भी बन रहा है ये गुरुजी बनवा रहे हैं फॉर हिज लवली संगत, सो आई वुड नेवर टेस्ट, आई वुड जस्ट
सरेंडर टू गुरुजी कि आप ही कर रहे हैं। तो मैं फॉर द पिछले सत्संग उनके लिए कोकोनट चटनी उन्होंने बोला था, तो मैं ले गई थी, पर इट वाज अ कंप्लीट डिजास्टर। एंड नहीं तो नॉर्मली गुरुजी की मेहर से इतना स्वाद हर चीज बनता है, और ये मैंने बोला गुरुजी ये क्या हो गया, एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड इट। तो जब इन्होंने ये बोला कड़ा प्रसाद, तो मैं मन में बना रही हूँ कि ऐसे होएगा, और बिकॉज उनका थोड़ा दूर है तो कार में जाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं ट्रेन में जाती हूँ उनके वहाँ। और मैं सोच रही थी कि मैं कैसरोल में डालूंगी, कपड़े में लपेटूंगी, बिकॉज ट्रेन में यू गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, डिफरेंट वाइब्स, डिफरेंट एनर्जीज, और ये इतना डिवाइन प्रसाद हम लेकर जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ आई विल टेक इट। So all this ये मेरे मन में चल रहा है while I'm walking, sort of, and it's a beautiful place where I walk in nature and all that stuff. Really connect. I love doing that because I just feel I'm connecting to my Guru Maharaj. So as I'm doing that, ये संगत का मुझे मैसेज आता है कि Are you coming to the satsang? And I said, हाँ, of course I'm coming. I'm bringing the Kada Prasad. And वो कहते the satsang is happening now. It's already taking place. And it's like मेरे पैरों से जमीन निकल गई, and I'm thinking, ये क्या हो गया गुरुजी, कि ये सारा हम प्लान मैं कर रही हूँ। And normally वो हमेशा सत्संग संडे को करते थे, and जब उनका सत्संग का इनवाइट आया, I didn't even see the Saturday, I just put it down as the Sunday, and I thought it was the next day, and I was upset. But then I knew that इसमें भी कोई रीजन है गुरुजी जो मुझे बताना चाह रहे हैं कि क्या where I've gone wrong, or there's a lesson for me in this. And so मैं next morning जब मैं pray कर रही हूँ तो गुरुजी से आंसर मिल जाता है। गुरुजी कहते हैं कि for that coconut also, that chutney that didn't go well, कि हम इतने भाव से घर में बनाते हैं, भजन लगाते हैं कि हम गुरुजी के कर रहे हैं, कहते हैं, पर फिर that भाव should carry on throughout until the langar that we have made, it has to, till it reaches the house where satsang है, तब तकन गुरुजी क्या शब्द बजना चाहिए. It should go with that same amount of purity, sanctity. And what had happened was, because मैं वहाँ ट्रेन में जाती हूँ, so मैंने रक्सैक या बैग में रखा है, बैग मेरे लैप पे है, and जे किसी का फोन आया, और I'm looking at the phone, my mind, I mean, चाहे भजन भी बज रहे, पर फिर जे किसी का फोन आ रहा है, I'm listening to that phone. And if we think about it, जब हम गुरुजी का भोग बनता है घर में, लंगर प्रसाद बनता है, we just dedicate it to bhajans. We are not answering phones, we are not talking to anyone, we are concentrating on what we are doing. And I realized what Guruji's message was. And then for the Kada Prasad, what he told me was, jo Kada Prasad hai, it should always be made at the house jahan satsang hai. It shouldn't be transported from A to B. So that's why वो सेवा जो मुझे ये beautiful संगत ने दी थी, गुरुजी wanted me to say कि ये जो कड़ा प्रसाद का सेवा है, चाहे if I accept it, I should go to their house and make the kada prasad there, not be carrying the end product, the kada bana hua. I can take the ingredients to their house, but the kada prasad should always, because it's such a divine prasad, it's Guruji giving it out. हम सोचते हैं हम लोग संगत के थालों में डाल रहे हैं, it's Guruji अपने हाथों से बांट रहे हैं to each and every संगत. So it has to be made in the most purest way in जहाँ सत्संग हो रहा है. और जो सेवा बांटी होती है, to take the लंगर प्रसाद, चाहे रोटी सेवा हो, सब्जी सेवा हो, साले दही जो मर्जी हो,
it has to be taken with that same level of purity. ये नहीं कि हम कार में बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, discussing everything else. We have to have the shabads on, हाथों में प्रसाद अच्छी तरह लेकर जाएं. If we are driving on our own and we have that seva, so put it के sheet बिछाओ and cover the dish, whatever आप लेकर जा रहे हो कि हमने भोग लगाना है गुरुजी को. So don't just dump it in the boot. Even if you bought something from the shop, it could be matti or whatever, namkeen for the chai prasad. Don't just leave it in a bag in the boot. Put it with respect कि ये भोग लग रहा है मेरे गुरुजी को. So that was such a key thing that I understood कि where are what we were doing wrong, and I'm sure it happens with many sangats, as it happened for me when I took it on the train, and especially when you're going in public transport. Please be aware कि इतनी different energies हैं and लोगों ने कैसे खाया पिया जो भी होता है, you're surrounded by such people. Keep the mantra jap going. Whatever you're carrying, try to preserve it. Guruji will respect and love the bhav that you have. ये नहीं कि हम रख रहे हैं और अपने friends से बातें कर रहे हैं and all that. So please, this was what came out, and it was so sort of, it really struck a chord कि मेरे सेवा में, इतनी कमी, and Guruji guides us, and I'm sure this will help a lot of sangats around in the world who do such beautiful seva, but sometimes thoda bahut, we forget certain things. So this is just something I know will help each and every one of us. I'm sorry, I forgot to mention that when the sangat had told me that the satsang had started, I prayed to Guruji and I said, Guruji, please, kisi bhi tarah ye kada prasad वहाँ पहुँच सकता है, because there was no time for me to make it और उधर लेकर जाऊँ, and I couldn't think of any sangat who lived nearby who could make it and just take it there. And I just sort of visualized कि कोई aunty होए, sort of थोड़ा कोई हलवा ले जाए, and कि उसका satsang, it's incomplete without the kada prasad. So I'm, in my mind, really devastated कि I've let the sangat down. And then I'm telling the sangat the next day about this satsang. And then she tells me, she says, Aunty, can you believe it? A new sangat came, and she came with halwa. And when she told me, my eyes, they, filled up with tears. And why I related the previous satsang about जो मैंने heart shape का किया था कि गुरुजी सुनते हैं, and this time also he wanted to say really in his own way कि this was just a guidance. It wasn't that we sort of have done something so wrong. It's his teaching for us कि how to in the future, how we have to move forward, and with his guidance every step of the way, how we proceed and how we need to do these satsangs, and especially langar seva. It's not a joke. People the sangat has to understand कि ये गुरुजी को हम ऑफर कर रहे हैं, and जो संगत को ऑफर कर रहे हैं जिसमें गुरुजी बस रहे हैं, हम एक संगत को ये खिला रहे हैं. So we have to make it with pure bhav and so much love. And itna mera shukrana for Guruji ke every step of the way, kabhi I get stuck, I just ask for guidance ke Guruji, I know nothing and I need your help. And through many of the beautiful sangats, and especially the old sangats who've been guiding me and helping me in this journey. So aap sabka itna shukrana, and thank you so much for listening to my satsang. Jai Guruji.